by writing question answers, by seeing unseen passages. So here I am back with the most probably all the important or repeated questions with your class 12 mission reloaded in our live session. So here you can see section A, that is totally depend on reading part. 1 and 2 questions both are included from the unseen passages. These both questions depend on unseen passage. And first I'm going to tell you, second you have to find it. So, okay, first you can see we will do second one. Read the following passage carefully and answer the questions given below. In this question, you will see there are 9 questions which you can see easily. This is your passage. Now, okay, here you can see the question answers which I have told you. Total number of question answers are 9. Here you can see 6. 7 is of your find out the words from the passage, which means this 1, 2 and 3. And you have to find the passage, the similar word from the passage, but only from the totally passage. That is an idea which is not clear or exact, nebulous. We know about the idea, or we know the not clearance meaning, but not exactly meaning. So एक idea जो कि clear या exact नहीं होता, उसको कहते हैं nebulous. So बहुत कुछ कहते हैं, but we have to use only the word which is included, which is already given in the passage. So उसमें आपको पूरा word, पूरा passage, पूरा sentence आपको देखना पड़ेगा, पूरा paragraph आपको पढ़ना पड़ेगा. So actually students की problem थी मैम how to find it. So मैं उसी के लिए बता रही हूँ आपको. I'm going to tell you just with this because of following the students problem. As you can see, nebulous is a word which means an idea which is not clear or exact, and I have taken this word from the passage only. Next is a situation in which people agree or have the same opinion. Concurrence, जिस पे आप agree हो जाते हो, that is included in consent also general meaning की अगर अपन बात करें, लेकिन यहाँ पे concurrence जो है वो आपको already mention होगा passage में. A strong hope or wish, that is aspiration. So next passage from chapter question 2, which I am going to tell you, I am going to read you and focus. You have to focus on it so that you will be able to understand how to give the answer, how to find it. Every moment of life is precious. Time is the essence of life. It is the wealth given to us by nature. Every day all of us get 24 hours, nothing less, nothing more. Now it is up to us how we use it. People who know how to make the best use of every moment easily open the doors of success in their lives, and those who misuse time get failures one after the other. There is a saying that spend time and spend words cannot come back.
Everybody is tied by the limits of time. Even God respect the boundaries of time. Work wins appreciation only when it gets completed in a requisite time frame. Beyond the time allotted, work loses all its utility, however good may have been its quality. Just as falling of rains after the crops have dried up have no use. Likewise, when the time has passed the deadline, the work loses its importance and value. When iron is hot, it can be cast into whichever shape we want. Once it goes cold, nothing can be made out of it. However, much we may beat the same in the same way. A person who has learned to wisely use his time and has understood how to cast himself according to the need of the time has actually learned the true mantra of life. Shakespeare wrote in one of his plays, I wasted time and now doth time waste me. It is true that a person wastes even a little bit of time loses wonderful opportunity that he could have otherwise availed of by utilizing that time. All the great leaders have one thing in common. They wisely utilize every moment of their time. When other people are busy in wasting their time in laziness, great men are busy in making plans for the future. There is no person in history who wasted his time and still managed to achieve greatness. Therefore, there is great need to manage time wisely. Careful time management refers to careful planning of time and sincere execution of this plan. This is the only mantra to attain success in any endeavor. A person change in outlook and some modification in one's daily routine can result in a big jump forward towards greater achievement. Okay, I want to tell you about the question number one. कि question number one मैंने आपको read करके इसलिए नहीं बताया. Students are saying कि मैम क्वेश्चन वन आप रीड करते थे वो क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन वन स्किप किया. उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ सिमिलर वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने बताए. दैट हाउ विल यू सर्च इट, हाउ विल यू फाइंड द मीनिंग. एंड क्वेश्चन टू जो है मैंने रिपीट किया, मैंने रीड किया, आपको अंडरस्टैंड करवाया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ मच टाइम इज गिवन टू एवरीवन डेली. पैसेज के अकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि जनरल क्वेश्चन है. वी ऑल हैव ओनली 24 आवर्स इन आ वन डे इन डेली लाइफ. ठीक है, तो हम सबके पास में एवरीवन हैज 24 आवर्स डेली. What determines success or failure in life? Success or failure in life is determined by the way we use our time. वो सिर्फ डिपेंड करता है उसी इंसान पे, उसी सिचुएशन पे कि कैसे हम हमारा टाइम यूज कर रहे हैं. Whether we are wasting our time, whether we are utilizing our time. And if we are wasting our time, we do not get any kind of opportunity. And if we are wasting our time, we definitely lose the opportunity या available time whichever we have. ओके, तो बाय द वे वी यूज आवर टाइम ये डिपेंड करता है हमारी सक्सेस और हमारे फेलियर को. व्हेन डज वर्क विन अप्रिसिएशन? वर्क विन्स अप्रिसिएशन व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन रिक्विजिट टाइम फ्रेम. व्हाट डज हॉट आयरन सिंबलाइज इन द पैसेज? हॉट आयरन इन द पैसेज symbolizes opportunity and timing. Okay, in the passage, one more thing I want to tell you why I have taken this passage to understand you. I want to tell you about the lines. आपको एक वर्ड का आंसर लिखना होता है तो यू विल राइट ओनली वन वर्ड एंड जस्ट काम खत्म. नो, अगर इसने पूछा है व्हाट डज हॉट आयरन सिंबलाइज इन द पैसेज, तो हॉट आयरन इन द पैसेज comma symbolizes opportunity and timing. You have to use these both. You have to use the whole line by using these 2 points in your answer. Come to the next. Find out the opposite word of waste. Waste का हमें पता है opposite word होता है साफ सुथरा. डेफिनेटली वेस्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज. फाइंड ये यूटिलाइज वर्ड इसका कुछ और भी हो सकता है, बट यूटिलाइज वी आर यूजिंग हियर बिकॉज ऑफ द पैसेज. फाइंड आउट द सेम वर्ड फॉर अ लाइन दैट मार्क्स द लिमिट. ये अपोजिट ढूंढता है, ये आपका सिमिलर वर्ड ढूंढता है. मीन्स synonyms. Got it? Boundary. A line that marks the limit, जो आपकी लाइन लिमिट मार्क कर दे या फिर आपको बता दे हाँ दिस इज अ वॉल. वॉल भी हो सकता है बट बाउंड्री ऑलरेडी गिवन इन योर पैसेज.
Come to the next, that is your section B. That includes your writing skills. You are Sumitra or Sumit, studying in Government Senior Secondary School, Jaipur. Your school is organizing a debate competition. Draft a notice as a cultural secretary of your school students union. Okay? आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है एज अ कल्चरल सेक्रेटरी. तो आपकी डेजिग्नेशन, आपकी पोजीशन भी इसमें बता दी कि यू आर अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट्स यूनियन. किसके हैं? स्टूडेंट यूनियन के. आप कौन है? सुमित्रा या सुमित नाम के इंसान है जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा है जयपुर में. हियर यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ दिस बाय यूजिंग ब्रैकेट. The most important thing, you have to make a box, you have to make a bracket while making notice writing, while doing notice writing, advertisement, or you can say your invitation writing. Bracket box is very much kind of essential. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर ये आपका इंक्लूड करता है ओनली वन लाइन में ही आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी. नेक्स्ट इज डेट आपकी आ जाएगी. यू हैव टू, मैंने पहले भी बताया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर कि डेट आप इस तरीके से मेंशन करोगी. यहाँ 11/5/2000 समथिंग है, तो यू कैन टेक, जैसे कि आज है हमारी डेट है 6 तो आप लिख देंगे 6 अगर आप फुल नेम लिख रहे हैं तो फैब्रवरी, और हाफ लिख रहे हैं तो फैब डॉट लगाएंगे बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन एब्रीविएशन फॉर्म. और जब एब्रीविएशन आप करते हो, शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप ऑल्सो, देन कॉमा और नेक्स्ट ईयर आपका. नेक्स्ट इज नोटिस आ जाएगा उसमें, और देन नेक्स्ट जो आपका नोटिस राइटिंग का टाइटल होता है वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें. नाउ हियर आई एम गोइंग टू रीड योर नोटिस राइटिंग. The annual English debate of our school will be held on 4th and 5th March. Those who wish to participate must give their names to the undersigned by 15th Feb. There are attractive prizes at 3 levels and no one consolation prize. वहाँ पे बहुत सारे attractive prizes हैं 3 levels के लिए, और consolation prize भी one is consolation prize. तो एक consolation मतलब special prize लिखा गया है. फिर नेक्स्ट आपका नेम आ जाएगा सुमित, आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, आप मेंशन कर देंगे. गॉट इट. स्टूडेंट्स यूनियन में आपको ऑलरेडी वहां पे मेंशन कर रहा है स्टूडेंट्स यूनियन. स्टूडेंट्स का यूनियन आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है स्टूडेंट का यूनियन. ठीक है, लेकिन हम प्लूरल कर रहे हैं. व्हाई वी आर यूजिंग apostrophe after s, because the teacher आपको बताता है apostrophe s लिखो, तो पहले apostrophe you have to mention, then writing s. But why I am using after s apostrophe? Why I am using apostrophe after s? Because of the, I am talking about whole of the students here. Got it my point? Please don't do these kinds of silly mistake from the next time by while writing notice writing. Got it my point? Come to the next. Write your views on urban life versus rural life in about 80 words. Which lifestyle should be preferred and why? Consider factors such as environment, opportunity, community and quality of life in your response. एक इनडायरेक्टली कहा जाए तो आपको ये डिबेट है फॉर और अगेंस्ट के लिए, तो आपको पैराग्राफ लिखना है फेवर में टॉपिक के और अगेंस्ट में. ओके, यहाँ पर आपको लिखा गया है, देखें, अर्बन लाइफ को रूरल लाइफ से कंपेयर किया है. अर्बन लाइफ इज फास्ट पेस एंड ऑफर्स बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज. Cities have modern facilities but also pollution, traffic and stress. In contrast, rural life is peaceful with fresh air, greenery and a close-knit community. However, it may lack advanced medical care and career growth. While urban areas provide convenience, villages offer a natural and simple lifestyle. Both have their pros and cons, and the ideal choice depends on individual preferences and priorities. Got it? ये हमने मेंशन कर दिया. कम टू द नेक्स्ट. ओके, यहाँ आपको ये भी कंसिडर करना होता है कि एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी, कम्युनिटी, आपको मेंशन किया है कि रिस्पॉन्स में सब बताना है, इसलिए वी आर यूजिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन टुगेदरली.
गॉट इट। हमारे व्यू बताने अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। तो अर्बन लाइफ के हमने बता दिए तो डेफिनेटली ये पता चल जाता है कि रूरल लाइफ क्या है और अर्बन लाइफ क्या है। सारे यहाँ पर जो है ये अर्बन गलत प्रिंट हुआ है। Here, rural areas provide convenience. Villages offer a natural, simple lifestyle. तो villages के पास भी अब natural और simple lifestyle रहती है। पहले वो जैसा था वैसा करते थे, लेकिन अब थोड़ा उसको modify कर दिया, थोड़ा सा modern look उनको दे दिया, so that they are also capable to functionize like us. Come to the next. दो क्वेश्चन आते हैं आपके ऑप्शन में। फर्स्ट आपका आ गया नोटिस राइटिंग, सेकेंड आपका आ गया डिबेट वाला, मतलब कि पैराग्राफ राइटिंग आर्ग्यूमेंट। थर्ड आपका आता है एडवर्टाइजमेंट। आई हैव टेकन योर पोल। Deacon International is looking for a receptionist for the school. Write an advertisement on behalf of the administrative officer in the classified column of the local newspaper, giving necessary details. Draft an advertisement in not more than 80 words. Okay. So we will draft an advertisement as we have already discussed about it. Yet how you can write notice writing, advertisement, invitation writing. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बोला था already, notice while writing, notice writing while writing, advertisement writing while writing, invitation writing, whether it is formal or informal, you have to make a box, a bracket. ठीक है। और फिर वो मैटर भी डिपेंड करता है कि वो ब्रैकेट आपका स्क्वायर में बनता है या रेक्टेंगल में बनता है। गॉट इट। सिचुएशंस वैकेंट, सबसे पहले आप इसमें टाइटल मेंशन कर देंगे सिचुएशंस वैकेंट। अब आप यहाँ लिख सकते हैं वैकेंसी फॉर रिसेप्शनिस्ट, ये भी मेंशन हो सकता है, या वैकेंसी डायरेक्ट, ये भी मेंशन हो सकता है। यू हैव टू राइट कम से कम वर्ड्स आपको यूज कर रहे हैं दैट, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में वी ऑल नो अबाउट कि हर चीज का पैसा लगता है। तो जैसे कि उसमें मेंशन होता है कि शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट लैंग्वेज में हम ये सारी चीज मेंशन कर दें विच एवर वी रिक्वायर। ओके। वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर आवर स्कूल। The candidate must be fair, beautiful, slim, well behaved and sweet spoken. She must be a convent graduate with dynamic personality. अब फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए हमें, यहाँ पे हमने ये भी मेंशन कर दिया, हमें मेल नहीं फीमेल ही चाहिए। She must have 2 years experience of working in a reputed school. 2 नहीं हो, 4 हो, 10 हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बोला है उसने। Only shortlisted candidates will be called for interview. Use of influence will lead to the cancellation of the candidature. Decent salary package for the right candidate. Last date. Okay, no issue. वो पेज कहीं और मिस हो गया है। तो लास्ट डेट फॉर द इशुएंस या लास्ट डेट फॉर द वैकेंसी हम प्रोवाइड कर देंगे, जो भी हमारी लास्ट डेट होगी। गॉट इट माय पॉइंट। और उसके बाद में वाइंड अप हो गया, ये फिनिश हो गया। उसके बाद में आपको नो नीड टू राइट, कई बार मैंने स्टूडेंट्स की नोटबुक देखी है, वो नोटिस में जैसे कि इनविटेशन राइटिंग में वो मेंशन करते हैं अपनी डेजिग्नेशन, अपना नेम, यहाँ पर भी वो मेंशन कर दे। प्लीज डू नॉट राइट योर कॉन्टेक्ट नंबर, यू आर मेंशनिंग द डेजिग्नेशन, यू आर मेंशनिंग योर नेम। डू नॉट राइट। आपको कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करने हैं, आप यहाँ पे लास्ट डेट बताएंगे, देन राइट कॉन्टेक्ट नंबर, दैट्स इट। प्लीज का फॉर्मेट चेंज ना करें कि आप यहाँ पर अपना नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहे हैं। प्लीज नो नीड टू राइट इट। फॉर्मेट आपका यही रहता है, इसमें पूरा पैराग्राफ राइटिंग बेस्ड होता है और 4 to 7 लाइन ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स यूज करनी है। और सिचुएशन वैकेंट जैसे मैंने टाइटल दिया है, टॉपिक दिया है, वैसे ही आप क्वेश्चन भर के उसका एक टाइटल कुछ निकाल लेंगे और वो आप शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में लिख देंगे। ओके, दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। Come to the next. Write your views in about 80 words against commercialization of education. Focus on how high fees exclude deserving students and create social inequality. Your answer should discuss how creating education as a business prioritizes profit over knowledge. आपको ये मेंशन करना है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आपको इसने ऑलरेडी मेंशन करके दिया है योर टॉपिक एंड यू हैव टू राइट फ्यू लाइंस ऑन इट सो दैट एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स। तो अगेंस्ट इसने मेंशन कर दिया, फॉर और अगेंस्ट। हेयर इन इट अगेंस्ट में इसने मेंशन किया एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, बट कॉमर्शियलाइजेशन जो है उसको टर्न कर देता है बिजनेस में। डेफिनेटली
कॉमर्शियल है, बिजनेस ट्रेड कर रहे हो तो आप बिजनेस में चले जाओगे। ठीक है, अगर टीचर आपको विदाउट सेल्फिशनेस पढ़ा रहा है, इट मीन्स उसको अपनी सैलरी से, उसको अपने पैसों से मतलब तो होगा, लेकिन इतना नहीं है, पहले बच्चा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं समवेयर के लिए स्टूडेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा देखूं कि नहीं मुझे तो पहले पैसा चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे लिए स्टूडेंट कम और मैं यहाँ पर कुछ भी आगे पढ़ा, बट दैट इज नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से बात हो रही है, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, सबको मिलने वाला राइट है, हम उसमें डिसाइड नहीं कर सकते आपको पढ़ाएंगे आपको नहीं पढ़ाएंगे, तू तो पढ़ सकता है बच्चा, तू नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कॉमर्शियलाइजेशन में अगर उसको टर्न कर देते हैं तो ये एक बिजनेस बन जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चार्ज करते हैं, जैसे कि हाई फीस होती है उनकी, इट मेक्स क्वालिटी एजुकेशन अनअफोर्डेबल फॉर मैनी पीपल। कई लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे पीपल के लिए अनअफोर्डेबल है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। स्कूल्स एंड कॉलेजेस प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर लर्निंग। अब वो कहीं ना कहीं देखते हैं लर्न कराते टाइम प्रॉफिट तो देखेंगे ही ना, तो लर्न कराते कराते प्रॉफिट पे जाते। इट अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, डिजर्विंग स्टूडेंट्स ऑफन मिस अपॉर्चुनिटी, और इसी वजह से जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। एजुकेशन शुड फोकस ऑन नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, नॉट मॉनेटरी गेन्स। द गवर्नमेंट मस्ट रेगुलेट फीस एंड इंश्योर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। और गवर्नमेंट जो है वो उनकी फीस को रेगुलेट करती रहे, मतलब कम ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहे, और डेफिनेटली उन लोगों के लिए कुछ ऐसा रूल निकाल दे सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी इन अ वेरी इजी मैनर विदाउट प्रॉब्लम एंड इंश्योर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। और सबके लिए इक्वली लर्निंग अपॉर्चुनिटी निकाले सो दैट जो दोज हु आर नॉट केपेबल टू लर्न समथिंग वो भी लर्न कर सके, हाई फीस को देख के उनको मना ना हो। प्लीज come to the next. Your name is Kiran Kumari. Your friend Kamini is organizing a dance competition on 14 November. She invited you to act as a judge for the same, but you are not able to go here there as you have a prior appointment. Respond her informally declining the invitation. Here I have taken invitation writing. इसमें आपको already mention होगा respond her informally declining the invitation, मतलब ये इनफॉर्मल इनविटेशन है जो कि डिक्लाइन है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको, डिक्लाइन कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, here you can see as I have already told you, you have to make a bracket, you have to make a bracket in it, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। okay, bracket is you can able to see in the first two lines you have to mention address in a very short manner, just like letter writing. Then next, date, I have already told you how you will write date. Next is dear Kamini, तो आप लिख रहे हो many thanks for your invitation to act as a judge for dance competition on 14 November. I regret to say that it will not be possible for me to come due to a prior appointment. उसने आपको वहाँ रीजन भी दिया था, because you as you have already a prior appointment, तो आप यहाँ पर इतना सा इन्फॉर्म करके देख सकते हो। अब प्रायर अपॉइंटमेंट किसका है, नो नीड टू राइट देयर, आप कुछ भी पॉइंट या तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो इशू टू राइट देयर। गॉट इट, तो इधर आप देख सकते हैं आपके पास सेंडर एड्रेस है, फिर से हाईलाइट कर देते हैं, डेट है, देन आपके फ्रेंड का नाम है, उसके बाद में आपने एक रिस्पॉन्स किया है यहाँ पे कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, but still I am feeling regret to say that I will not be able to attend your I will definitely come, but there is no possibility for me to come because yeah, as I have I have a prior appointment. I wish the competition every success. मैं उम्मीद करूंगी कि कंपटीशन जो है सक्सेसफुली रहे। योर सिंसियरली किरण कुमारी, जो आपका नेम है, जस्ट लाइक द फॉर्मेट इज जस्ट लाइक सेम एज योर लेटर राइटिंग, एक्सेप्ट in letter writing you will not make bracket, but in invitation, in notice writing, in advertisement you have to make bracket. मैं बार बार बोल रही हूँ, you have to make a box, do not forget it. Come to the next, that is section C, totally depend on grammar portion. Fill in the blanks by choosing the appropriate phrasal verbs given in bracket.
The king was able to dash the rebellion. Put off या put down. The king was able to put down in it. Got it my point? My grandparents are dash taking care of her. Breaking up या bringing up. दोनों सेम सेम से लगते हैं बट फोकस है कि आपकी ब्रिंगिंग कैसे रही है. हम बोलते भी हैं ऐसे. अगर किसी बच्चे ने कुछ वर्ड्स नहीं याद किए हैं तो ये वीडियो से देख के वो रिकॉर्डिंग से देख के आराम से पता लगा सकता है, आराम से समझ सकता है. कैरी अप, carried on, break up, breaking on, bringing up, grown up, ये सब वो कर सकता है. carried out, ये सब वो easily समझ सकता है. So my grandparents are bringing up, taking care of her. Don't forget to dash all the lights when you leave. Turn off या turn down. Don't forget to turn off all the lights when you लीव. ठीक है. टर्न ऑफ, टर्न ऑन ये तो हम समझते हैं बट डू नॉट फॉरगेट. जो लोग स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा बिलीव करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पर ऑन और ऑफ वाला है तो ओ डबल एफ आएगा, ओ एफ नहीं आएगा. प्लीज कम टू द नेक्स्ट. मोहन डैश अ नोबल फैमिली कम्स ऑन या कम्स ऑफ. मोहन कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली. I don't know of I don't know how she dash with noisy children all day. Puts up या puts in. I don't know how she puts up with noisy children. The thieves dash and stole all the equipment. Broke up या broke it. The thieves broke in and stole all the equipment. The next is fill in the blanks by choosing the correct conjunction given in the bracket. The rainfall is declining dash the forestation has increased. However या and डेफिनेटली आप यहाँ पे आइडिया भी लगा सकते हो. अब कुछ बच्चों को however का मीनिंग नहीं पता हो तो देयर इज नो नीड टू वरी. जब दो ऑप्शन में आता है तो एक डेफिनेटली हमें आता होता है और एक नहीं आता होता है या कई बार दोनों आते होते हैं बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है. अगर हमने पढ़ाई की है तो डेफिनेटली हमें आते ही होंगे. तो द रेनफॉल इज डिक्लाइनिंग, द एफोरेस्टेशन हैज इंक्रीज. तो एंड नहीं होगा, उसमें होगा हाउएवर. जैसे ही रेनफॉल डिक्लाइन होगी, कम होगी, तो एफोरेस्टेशन इंक्रीज हो जाएगा. टेल मी डैश यू हैव सीन माई पर्स. जब जगह की बात होती है we have to use where. So tell me where you have seen my purse. Ask the bus conductor dash is the time for the bus to start. See what is the time for the bus to start. What? Yeah, it. Got it? Come to the next. Combine each set of sentences into one sentence as directed. So Juhi bought a ring, it was made of gold. Use adjective phrase. एडजेक्टिव फ्रेज यूज करने के लिए हमें क्या करना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है व्हाइल यूजिंग एडजेक्टिव फ्रेज हमें देखना है कि जो नाउन है इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, जो भी इसमें नाउन है वहां पर एडजेक्टिव भी मेंशन होगा. तो जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उस वर्ड को सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उस वर्ड को नाउन के पहले, नाउन के बिफोर द नाउन कर दें तो वो एडजेक्टिव फ्रेज ऑलरेडी बन जाएगा. ठीक है. जूही बॉट अ रिंग, इट वाज मेड ऑफ गोल्ड. जूही बॉट अ गोल्ड रिंग. रिसेंटली अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था मैंने, वीडियोस में भी लिए हैं कई बार. और राइट नाउ आई एम आल्सो यूजिंग दिस सेंटेंस बिकॉज इट इज द मोस्ट रिपीटेटिव सेंटेंस इन इट. in this question combine each set of sentences. Raju went away, he did not take a receipt. Use gerund with preposition. अब कई स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता कि मैम what do you mean by gerunds, what do you mean by participles. Okay, whenever we are talking about participles, gerunds, तो ये इंग्लिश के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं. जो पार्टिसिपल्स जो है एक फॉर्म है जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म जो होती है. जस्ट लाइक I want to tell you, firstly I want to take that take I have taken. अगर मैं यहाँ पे take लेती हूँ, take, second form took, third form taken, fourth form is participle form that is taking. ठीक है. ये होती है आपकी प्रेजेंट सिंपल पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो टेकिंग आता है. ओके, नो इशू. इज देयर एनी इशू? नो इशू. ये होती है पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल.
अगर हम बात करें अब, if we talk about gerund, what do you mean by gerund? gerund में जब किसी वर्ड के आगे ing नहीं होता वर्ब के आगे, तो वो वर्ब कहलाती है, जैसे कि टेक है, ठीक है, ये वर्ब है। gerund में ing वाली फॉर्म आती है, जस्ट लाइक पार्टिसिपल, लेकिन इसमें जो होता है वर्ब होती है। gerund में ing फॉर्म उसके लगती है जो कि वर्ब तो होती है, लेकिन बाय एडिंग ing वो वर्ब जो है नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ing ऐड होने के बाद में वही फॉर्म ऑफ द वर्ब कन्वर्ट हो जाता है नाउन में। हाउ? बेस्ट एग्जांपल जो इसका लेती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले एग्जांपल ये आता है स्विम। आई एम गोइंग टू स्विम ममा। व्हाट आई सेड? आई एम गोइंग टू स्विम। मैं स्विम करने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हूँ? स्विम करने, मतलब तैरने जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं लिखती हूँ इसी स्विम को अगर ing एड ऑन करके स्विमिंग बनाती हूँ, तो व्हाट डज इट मीन? स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? उस स्विम को नाउन बना दिया आफ्टर एडिंग ing। तो gerunds are the words which make या which convert या which transform from verb to noun। इसका ट्रांसफॉर्मेशन वर्ब से नाउन की तरफ हो जाता है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल स्विम यू कैन यूज। और इफ वी आर एडिंग ing in it, if we are making gerund to swim, then you have to make noun, that is swimming। Got it my point? Come to the next. Here Raju went away, he did not take a receipt। अब आपको gerund with preposition यूज करना है। कैसे? राजू went है, एंड नहीं है। राजू वेंट अवे विदाउट टेकिंग अ रेसिप्ट। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पर क्या था? टेक था वर्ब, जिसको हमने ing ऐड करके चेंज कर दिया, और हमें इसके आगे पीछे preposition भी लगाना है, तो आई हैव एडेड विदाउट इन इट। गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट। Here you can see the next is fill in the blanks with the correct form of the conditional verb। conditional verb लगाने। conditional sentences कौन से होते हैं? As we have already discussed, if one, जहाँ पे कंडीशन लग जाती है यदि। आप रिमाइंड कर लें 2 मिनट, सो दैट आई कैन ड्रिंक वाटर। Okay, now come back. If dogs talked, they dash funny things। Say, if dogs talked, they would say funny things। अभी अभी स्टूडेंट्स ने, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम हाउ कैन वी जज कि इसमें जो फॉर्म आएगी वो पास्ट वाली आएगी या प्रेजेंट वाली आएगी। हाउ कैन वी जज, या फ्यूचर आएगी। आपको दो फॉर्म में सेंटेंसेस दे रखे होंगे, जैसे आपको कंबाइन द सेट ऑफ द सेंटेंसेस आया था, उसी तरीके से दो फॉर्म्स में सेंटेंसेस दे रखे होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा आपका जिसमें मीनिंग आ रहा होगा, कॉमा लगा के सेकेंड पार्ट में उसी से इंक्लूड करके और उसी से कोरिलेट करके कोई दूसरा सेंटेंस होगा, और उससे रिलेट होगा क्योंकि वो कंडीशनल वर्ब है। इफ डॉग्स टॉक, यदि डॉग टॉक कर सकते हैं तो कुछ तो फनी थिंग्स बोलते हैं वो, ठीक है। दे वुड से, वुड होता है जब हम यूज करते हैं विश वाली चीज, कोई ऐसी चीज जो कि हो सकती थी, है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। इफ डॉग्स टॉक दे वुड से फनी थिंग्स। पीपल डैश टायर्ड इफ दे डोंट स्लीप वेल। यहाँ पर इफ जो है बाद में आ गया। पीपल टायर्ड फील करते हैं जब वो, यदि वो अच्छे से ना सोए तो। पीपल फील टायर्ड इफ दे डोंट स्लीप वेल। यहाँ प्रेजेंट में आ रहा है, यहाँ पर भी प्रेजेंट में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। The dog dash you if it had not been tied up। had आ रहा है, past हो गया, past perfect हो गया ना, तो यहाँ पर हम will यूज करते ही हैं ऑलरेडी, तो will का would हो जाएगा और इसकी have लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि would के साथ में will के साथ में have का यूज होता है, has का नहीं होता। The dog would have
bitten you if it had not been tied up. Bite, bit, bitten. ये थ्री फॉर्म्स होती है ना. If I were old enough, I dash the Air Force. If I were past आ रहा है old enough, I would join the Air Force. उसी वजह से यहाँ पे would आया, will नहीं आया. और अगर मैं ज्यादा इनफ हो जाऊँ, ज्यादा बूढ़ा होके इनफ हो जाऊँ, अभी हुआ नहीं है, इट मीन्स उसके लिए ऑलरेडी मैंने बोल दिया. अगर विश होती तो काश ऐसा होता, उसमें would आप यूज करते. Got it? The next is explain the following stanzas with reference to the context. Okay. एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर. As I have already discussed your format. Therefore, on every morrow are we written a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and or darkened days made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Firstly, I want to ask you about from which poem it has been taken. यहाँ पर बात हो रही है आपकी अर्थ से रिलेटेड, आपकी ब्यूटीफाई कर रहा है वो चीज को, तो डेफिनेटली ये चीज है जॉन कीट्स की पोम अर्थ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो रेफरेंस ये है, दीज लाइंस आर फ्रॉम कीट्स पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अब कीट्स में आप देखेंगे एस के बाद में अपोस्ट्रोफी है. आप लोग ये ना देखें कि अपोस्ट्रोफी है, कीट्स की पोम से ली है जिसका फुल नेम इज जॉन कीट्स. इसमें एज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एज यू कैन सी रेफरेंस हो गया. नेक्स्ट इज कम टू कॉन्टेक्स्ट. According to Keats, a beautiful thing is a permanent source of joy for us. It has a number of blessings to give us, such as a quiet shelter, a sleep with sweet dreams, and health with quiet breathing. Keats के अकॉर्डिंगली ब्यूटीफुल थिंग जो है परमानेंट सोर्स है हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हमारे जॉय के लिए. इट हैज अ नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी है ताकि वो हमें शेल्टर स्लीप दे सके विद स्वीट ड्रीम्स के संग में, और हेल्थ जो है क्वाइट ब्रीथ करती रहे, हमारी हेल्थ अच्छे से हमसे जुड़ी रहे. आवाज मेरी क्लियर है बेटा? आई एम स्पीकिंग वेरी इन अ वेरी लाउड मैनर. नॉट इम्पॉर्टेंट की तो बात ही नहीं होती, बिकॉज नॉट इम्पॉर्टेंट तो ऐसा कुछ कराते ही नहीं है हम. these all are included and these are all important. As your board examinations are near, you have to study it. Come to the next explanation कि अब हम कॉन्टेक्स्ट में से वो बताएंगे जो यहाँ पर मेंशन है. मतलब कॉन्टेक्स्ट में से वो आएगा जो आपका समराइज ना करते हुए उसको हम बिल्कुल सॉरी समरी मैनर में हम उसको मेंशन कर देंगे. एक्सप्लेनेशन में जो आपका पूरा पैराग्राफ था तो उसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट इज कीपिंग इन माइंड द ब्लेसिंग्स दैट अ ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड्स अस, we like to find ourselves to the earth with a garland of flowers that we weave every day. We suffer from many ills. आप माइंड में ये चीज रखनी है, हमारी ब्लेसिंग्स जो वो दी है, एक ब्लेसिंग ही है कि एक ब्यूटीफुल चीज हमें दी है जो अर्थ है, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें दी है जो हमने नहीं बनाई, वो बाय नेचर हमें मिली है, नेचुरल हमें मिल रही है वो चीजें, क्योंकि फ्लावर्स है जिसको हम बुनते हैं हर दिन. वी सफर फ्रॉम मैनी इल्स, बहुत सारी बुरी चीजों से, बुरी आदतों से, बहुत इल हेल्थ से हम सफर करते हैं. डिस्पोंडेंस एक सैड वर्ड है. दर्द ऑफ नोबल पीपल, आदर्श लोगों के लिए हम देखते हैं दुखी होते हैं. ये दिन जो है फिल हो जाते हैं विद सॉरो एंड सैडनेस, और डार्कन वेज जो है वो कारण बनते हैं हमारी ह्यूमन सफरिंग्स का. कुछ ब्यूटीफुल चीजें क्रिएट होती हैं बाय गॉड ये रिमूव करते हुए कि हमारा जो सैडनेस वाला दुखी होने वाला बर्डन है वो हम हमारे ग्लूमी स्पिरिट से, हमारे जुनून से, दुख भरे स्पिरिट से, उसको देखते हुए नेगेटिव चीज पे हम जीत हासिल कर लें कि गुड ओवर इविल हो जाए. ठीक है. Okay, one more point I want to tell you about that is conclusion. Why don't you write
दिस पॉइंट आफ्टर राइटिंग एक्सप्लेनेशन. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है आप इसमें मेंशन कर सकते हो. देयर इज अ use of simple language, simple lines, yeah, there is a use of understandable lines या understandable language. यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं सम पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड. अब वो कौन से हुए हैं जरूरी नहीं है सबको बताऊं, इसलिए आप सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट लाइन ये लिख सकते हैं सम पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड. तो एग्जामिनर को एक अप्रिशिएबल चीज मिलेगी जिससे वो आपके नंबर शायद ना काटे. ओके, इट इज वेरी वर्थफुल इफ यू विल राइट. Come to the next. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. ठीक है? Next is reference, context और explanation. जब ये है तो reference में देखें, these lines have been taken from the poem My Mother at 66, which is composed by कमला दास. ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रेफरेंस में मैं आपको बता दूं, जब भी आपके स्टेंजा आते हैं तो आप उस स्टेंजा को बाय कंसंट्रेटिंग करके उसको अच्छे से पढ़ें, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि फ्रॉम विच पोम इट हैज बीन टेकन, और फिर ही आपका आंसर आएगा रेफरेंस. देन कॉन्टेक्स्ट जो आप समराइज करके दे दोगे, द पोएटेस is going from her parents' home to the Cochin airport. She feels pain over her mother's condition and tries to divert her thoughts by looking outside the window of her car. बस इतना सा समझा दिया, आप एक्सप्लेनेशन में बताएंगे. After the security check, she again looks at her sickly pale mother, who looks like a moon in late winter, pale and dim. Sickly मतलब बीमार, pale मतलब फीका, मतलब येलोइश सा पड़ जाना. She fears separation from her mother as she may not survive for long. अब वो समझ चुकी थी, इतना फीका पड़ चुका है इनका फेस कि definitely she will not survive for long. She felt some old familiar pain and fear. To reassure her mother, the poetess promises to meet her soon and smiles again and again. This is poetess, not poetless. Got it? After completing explanation, you will write conclusion, which I have not told you in this, but I am telling you, अगर आप conclusion लिखते हैं, if you will write conclusion, तो एग्जामिनर समझेगा इस चीज को और वो आपको मार्क्स देगा. अगर आपके आधा एक नंबर 1.5 नंबर कट भी रहा होगा तो वो आपको आधा ही काट के 1 मार्क पूरा का पूरा कंप्लीट दे देगा आफ्टर सीइंग द कंक्लूजन. एक्सप्लेनेशन में सेंट्रल आइडिया आप मेंशन कर सकते हो, बट इतना ज्यादा लाइटली मेंशन करना, ओनली फॉर 2 और 3 लाइंस, बिकॉज एक्सप्लेनेशन होता है आपके स्टेंजा पार्ट का, मतलब जो 4 लाइंस 6 लाइंस गिवन है बस उसी का. सेंट्रल आइडिया आप उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ 1-2 लाइंस का 3 लाइंस का सफिशिएंट है. सेंट्रल आइडिया के लिए आपके अलग से क्वेश्चन आते हैं बेटा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डिड गांधी जी डू टू एजुकेट the people of Champaran? It has been taken from the Indigo chapter. आप यहाँ देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं आपके. विस्तार, फ्लैमिंगो, which include prose part and poetry part, दोनों इंक्लूड करते हैं. Got it? What did Gandhiji do to educate the people of Champaran? It has been taken from Indigo. He opened 6 primary schools where teachers work voluntarily. उसने क्या करा था एजुकेट करने के लिए? उसने 6 प्राइमरी स्कूल्स खोले थे जहाँ पे टीचर जो है अपनी इच्छा से, मतलब बाउंडेशन नहीं,
अपनी इच्छा से वर्क करते हैं. They taught them in a good manner about personal cleanliness and community sanitation. ओके, वो बहुत पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन से वो क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सैनिटेशन होता है, हमें गुड सैनिटेशन होना चाहिए, हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अवेयर होने चाहिए. वी शुड बी अलर्ट. Next is, what was Pancake? Why did the Germany studios buy it in the truckloads? Poets and Pancake. Pancake was the brand name of the makeup material that Germany studios, as is already included in Germany studios name. Okay, that is not included in plural form. Yes, it is your life. Jamni Studios bought in truckloads. Pancake was bought to turn the actors and the actresses ugly and to make them look real in the movie. Pancake जो है वहां से लेकर आया, उसने टर्न किया एक्टर्स को और एक्ट्रेसेस को अगली से बखूबी निभाया, उनको निखारा और उनको रियल मूवी का लुक दिया गया कि रियल लाइफ में किस तरीके से होते हैं. यस, लाइव है. How does the poet describe her mother? My mother at 66 it has been taken. The poet makes use of very apt similes. बहुत सारे similes उसने use किए हैं. Her mother's face is ashen like that of a corpse. She is as sickly and pale as a late winter's moon. उसकी जो मदर का फेस है वो एशन है, जस्ट लाइक अ कॉप्स, दैट इज योर डेड बॉडी. कॉप्स मीन्स डेड बॉडी हियर. शी इज एज सिकली एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून. Why is Uncle's wedding bond massive? Aunt Jennifer's tiger seat has been taken. It is a massive. Massive means huge, large, in the sense that it symbolizes her unhappy marriage with uncle. ये बहुत ज़्यादा huge है इस sense में कि symbolize करता है unhappy marriage with uncle. बार बार बताता है कि वो बहुत ज़्यादा नाखुश है. She is very unhappy with his uncle. Our uncle is not included, just like वो उसका अंकल था, वो उसका मिस्टर था, मतलब उसका हस्बैंड था वो. बट यहाँ पर हस्बैंड को उसने अंकल की तरह ही बोला है. आंट जेनिफर है तो अंकल को बोला है. Ever since she got married to him, her married life has been a burden to her. और वो जैसे ही मैरी करती है तो उसकी मैरिड लाइफ जो है उसके लिए बर्डन टाइप हो जाती है. मतलब शी इज नॉट लिविंग इन अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. शी इज जस्ट लिविंग अ बाउंडफुली लाइफ जो वो जीना नहीं चाहती. एंड शी इज कंपेयरिंग हर लाइफ विद टाइगर्स लाइफ because she thinks about the tiger कि tigers can live freely, boldly. वो आराम से जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हैं, हर जगह वो जा सकते हैं. लेकिन जो जिस तरीके से ये खुद है, ठीक है. अब आप ये देख सकते हैं उसकी जो लाइफ थी बहुत ज्यादा जस्ट लाइक हेल्थ थी. और वो कहती है कि टाइगर्स जो हैं वो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे. मैं तो टाइगर से भी बहुत ज्यादा गई गुजरी हूँ कि मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाती. मुझे उस अंकल की बाउंडेशन लाइफ को ही जीना पड़ता है. और शायद आफ्टर डेथ ना, मैं मरने के बाद भी इस चीज को सरवाइव करूंगी, मैं छूट नहीं पाएगी ये चीज. What things surprised the author most about Antarctica? From the chapter Journey to the End of the Earth, India and Antarctica were once the part of same landmass. This fact surprised her most about the Antarctica because the climate of these two places are different. Is different. Climate जो है इन places का बहुत ज़्यादा different. Got it my point? यहाँ पढ़ने आए, मैम को हाय हेलो बोलने नहीं आए. Got it? मेरी तबीयत खराब है, देखें वो मैं देख लूंगी. नो नीड टू वरी. ठीक है. इंडिया और एंटार्क्टिका दो ऐसे ही हैं जो सेम लैंडमार्क का ही पार्ट है. ये फैक्ट सरप्राइज है सब लोग सब तरीकों से, जैसे कि एंटार्क्टिका स्पेशली क्योंकि क्लाइमेट जो है इन दो प्लेसेस का काफी ज्यादा डिफरेंट है, काफी ज्यादा अलग है. नेक्स्ट इज व्हाट वाज सदाउ's अचीवमेंट एज अ डॉक्टर फ्रॉम द चैप्टर Anime. Okay. Sadao was a beautiful, dedicated doctor. He was a famous surgeon and expert in his art.
Even the general believed that he could operate him successfully. How did Douglas satisfy himself that he had overcome his fear? Deep water से लिया है. Douglas learned swimming with the help of an instructor. His fear returned now and then, so he decided to swim in Lake Wentworth in New Hampshire. He dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake. He swam in different styles such as crawl, breaststroke, etc. He puts his face under the water in the middle of the lake and saw bottomless water. Thus he got over his fear. उसने अपने fear को भगाने के लिए, अपने fear पे जीत हासिल करने के लिए उसने इसने इतना कुछ किया था. ठीक है? Got it my point? Come to the next. What idea do you form about Sophie's personality? That is it has been taken from Going Places. Sophie is a young girl, school-going girl. She belongs to a lower middle class family. She often imagines a glamorous life and dreams of meeting famous people like Danny Casey. She concocts a story of her meeting with Danny. She is a knave and struggles to see the difference between reality and fantasy. Her family finds her dreams unrealistic. उसकी family उससे ऐसे ही behave करती थी और सोफी जो है थोड़ा सा ड्रामेटिक रियल लाइफ से हटकर जीती थी. वो अपनी लाइफ वो रियल लाइफ से काफी ज्यादा अलग होके जीती थी. Got it my point? Come to the next. What made the paddler accept Edla Wilmanson's invitation? From the chapter Red Trap. Edla Wilmanson had a sympathizing look, friendly manners, and an assurance to go away unharmingly as and when he would like. This made the paddler accept Edla Wilmanson's invitation. और वो ये बताता है कि पेडला की एक्सेप्टेंस हो गई. जो एडला विल्मसन से इनविटेशन दिया वो पेडलर ने एक्सेप्ट कर लिया है. Next is, why do the most celebrity writer despise being interviewed? From the chapter Interview. Most celebrity writers feel that interviews victimize them. For them, interviews are an unwarranted intrusion. एक ऐसा unwarranted intrusion है, मतलब इतना stranger feel कराता है जो कि किसी बात की कोई गारंटी नहीं देता. Into the privacy of their lives, they somehow diminish them. कहीं ना कहीं वो उसको नीचा कर रहा है, diminish कर रहा है. It is immoral, it is a crime. वो काफी ज्यादा immoral है, मतलब unimportant है, uncertain है, वो अमृत नहीं है वो, और एक तरह से crime है वो चीज, वो illegal है वो एक चीज. ठीक है? तो सब लोगों का इंटरव्यू को लेके पॉइंट ऑफ व्यू काफी अलग था. as we have already done the chapter also from our I think in the previous video, yeah, last to last video, so it will clear to you. Hope, and I am included in, I have already included most of the repeated question, most of the chapters, so that you can easily understand, easily correlate this from your board exams, or easily do preparation by doing this, by solving this. I will come back definitely with a or leke most important or etc information leke or extra questions leke, so that it will definitely improve your exam. got got it, I think. Thank you.